आज की वीडियो नहायत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आप लोगों का माइंडसेट ऑल डन निश यू हैव ऑलरेडी पिक योर निश। और अब हम बात करेंगे क्योंकि इफ यू कुड रिमेंबर इन द माइंडसेट मॉड्यूल और आई बिलीव इन द हाउ टू अट्रैक्ट मनी, आई टोल्ड यू many people are just complaining they're not making money, but the real problem is, and I ask this question to every one of you, ask yourself, how many people did you ask today to buy the services from you? How many offers you made today? And if you're thinking without making offers you're gonna make money, then you are living in the wrong world. So, offer creation, in today's module, we're gonna talk about how to, like, we're gonna, again, this is the continuity of this. We were gonna be having a different parts of this section. But today we are gonna discuss mainly about how to do the market research call. क्योंकि जो भी आपने निश चुनी है उसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं है, बस हल्का सा पैशन होगा, थोड़ी सी स्किल सेट होगी और आपने लोगों को देखा होगा और माइट भी आपको क्लिक करती होगी, यू डिडंट ओवरथिंक, यू वर लाइक ओके लेट मी गो इनटू दिस निश, बट यू हैव no idea about their challenges, their pain points, what they would like to get, and how you will at least engage them with you. So इंडस्ट्री को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज हम सीखेंगे. Here's how what we are going to cover. The very first part of offer creation जो कि हम होगा वो होगी market mastery research. Finding the people in your niche, identifying their pains and frustrations in vivid detail. So this is very much important. किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आपको उसके पेन्स और फ्रस्ट्रेशंस मालूम होने चाहिए, वरना आप कैसे कनेक्ट करेंगे कॉल के ऊपर, कैसे उसको अपनी सर्विसेज बेचेंगे अगर उसका पेन पॉइंट ही नहीं पता होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. यू ऑलवेज सेल बाय रिड्यूसिंग देयर पेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोच हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो एक बंदे की क्या पेन होगी? मोटापा, डायबिटीज. That person doesn't feel good when they wear the good clothes. They feel lazy. These are the problems. So when you're going to talk to, like, again उसमें niche down कर लें, entrepreneurs को खाली entrepreneurs का खाली मैं nutritionist हूँ. So when the ad will come in front of me, मैंने इस entrepreneur को help किया, इस entrepreneur को help किया, then I'm an entrepreneur, I'm a CEO, I'm gonna be buying that person course और जो उसका मील प्लान है या जो उसकी जो भी गाइडेंस है, कोचिंग है, जो भी क्लासेस हैं, आई विल बाय दैट. व्हाई? बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट. अच्छा, लेकिन मेरे पेन्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, वो कह सकते हैं कि आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं लाइक चेयर के ऊपर, एंड दैट कॉजेज यू हैविंग अ रॉन्ग posture, or you don't have time for the exercise. Oh, I'm going to tell you 5 exercises to get the six pack abs and this thing, and be very confident by being a CEO. I'm just telling you कि ये pains and frustrations अगर एक entrepreneur की और CEO की find out करनी है, कैसे होगी? You need to talk to them. And second part जो है वो है result based offer creation. हम इसमें बात करेंगे understanding their pains and frustration, then creating an offer which solves their 2 to 3 biggest pains and problem. And the amount of offers we are going to make, that equals to number of people who are going to book appointments, and the people who are going to book appointments, we're going to close out of those appointments, inshallah. Now, let's talk about market mastery research. Just in case if you struggle to fill out the previous module's profit playbook and avatar worksheets, we highly recommend doing market research calls. क्योंकि अगर आपने ये अवतार शीट्स और ये तमाम चीजें फिल आउट नहीं कर पाए क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री के इश्यूज क्या हैं, तो फिर आपको ये पार्ट से गुजरना है. लेकिन अगर आपको पता है अपनी इंडस्ट्री के इश्यूज, पेन्स का पता है, यू हैव डन योर रिसर्च इन सम वे, और या आप उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट स्टिल इट इज हाईली रिकमेंडेड to do these market research calls. This allows you to gather powerful information around pain, desire, and values of your ideal clients,
free and fast. Okay, to learn more about your ideal client has to become an addiction. This is what you need to understand. ये आपकी addiction होनी चाहिए अगर आपने ideal client के हैं. I told you already, you have to absorb into that market, into that niche. ठीक है, एक निश होगी, एब्जॉर्ब करना आसान होगा. डेली निशेस तब्दील करेंगे या मल्टीपल निशेस के अंदर जाएंगे, then you can't absorb, then you can't communicate with the cardiologist. Getting started with market research calls. So first we need to find, where can I find my prospects for market research call. अगर मैंने मार्केट रिसर्च कॉल करनी है तो पहले मुझे ढूंढना है कि ये प्रॉस्पेक्ट है कहाँ पे मेरी निश के, जिनको मैंने टारगेट करना है. In our experience, by the way, Facebook groups are the easiest source to find these people. That's the best. So I'm just telling you, अगर वो clustered वहाँ पे है उनका, if they're clustered together in a Facebook group, then just go and reach out to those into those groups. Find those groups on Facebook and join them and use their members list as your outreach list. Facebook एक ग्रुप ज्वाइन करें, उनके मेंबर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और उनको एज एन आउटरीच लिस्ट इस्तेमाल करें. अगेन, whatever the platform जो उस टाइम में एग्जिस्ट करता होगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे कम्युनिटीज नहीं है, बट नाउ दे आर लाइक कम्युनिटीज, दे आर बिल्डिंग कम्युनिटीज, बट यू कांट सी देयर मेंबर्स. बट आप उसके अंदर भी यू कैन फाइंड, लाइक इंस्टाग्राम से आप फेसबुक कम्युनिटीज ग्रुप्स की तरफ जा सकते हैं. देयर कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी कि कोई नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स मौजूद हैं. You can do the, like, we literally yesterday, my one of the team member actually, they reached out to the person in the LinkedIn group, and she said, hey, we are serving um, the practices similar in similar like yours in this, from this group. और उस लड़की उस प्रैक्टिस ने उसी टाइम उस क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट बुक कर दी. That's how it works. I'm going to share those templates with you, by the way, in this course. So also make sure to send them friend requests in person before you send them a message. तो पहले क्या करना है, आपने friend request भेजना स्टार्ट करना है. ये आज जो आप सीखने जा रहे हैं, आज आप एक नया तरीका कार सोचने देखने जा रहे हैं. आपको लगता था कि फेसबुक इंस्टाग्राम जो है ना आपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करनी है. नहीं, यू कैन यूज इट, वी हैव यूज्ड इट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. वी हैव यूज्ड फेसबुक, इंस्टाग्राम and LinkedIn to make money out of it, and that's what you're going to learn in this course. Also, ask relevant questions in the group, but also make sure not to look like a creep in there. Looking like a creep would mean asking questions like, who are my real estate agents in the group? They'd kick you out. Instead, ask relevant questions, introduce yourself to the group, and everyone who engages on your intro post, send them a friend request and engage with them in a messenger conversation. अभी आप golden time में रह रहे हैं चैट जीपीटी के, and you can literally type this in the chat GPT and mention, hey, this is me, I'm just starting a real estate agency, yeah, dental agency, e-com agency, and I want to interact with these people, and I want to make a very impactful introductory post about myself. I'm starting and I'm learning in this industry, and I'm willing to work for free. I'm willing to share my experience with the fellow team members, make some really impactful introduction that other people comment under my post. Just say it to the chat GPT. They will give you, the chat GPT will give you the version of it. If you don't like it, just give it more instructions to it, and just do mention, don't make me a creep. Don't make a post that makes me creep. तो ये आप लिखेंगे तो वो आपको ना एक जबरदस्त किस्म की इंट्रोडक्टरी पोस्ट बना के दे देगा. इंशाल्लाह चैट जीपीटी का वर्जन भी ऐड करेंगे on your demand. Remember, we are not there to waste their time or ours. Therefore, we get straight to the point and be relevant. How to start reaching out. अब आपको बता दिया, आपने उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने वो ग्रुप के अंदर अपना इंट्रोडक्टरी पोस्ट भी डालनी है. अगेन, डोंट सेल एनीथिंग, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड डोंट बी अ क्रीप. और जब आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, कोशिश करें आपका फेसबुक कवर, डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू फेसबुक कवर, आपकी प्रोफाइल फोटो, आपकी बायो, आपकी जो पोस्ट हैं आपके पेज के ऊपर, वो आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट हो. देन दोज पीपल वुड एक्चुअली एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, एंड देन यू कैन से, hey name, hey Michael, thanks for accepting my request, send. As you can see, send का बटन है, मल्टीपल मैसेजेस करें ताकि उसको दिखे 4 5 6 मैसेजेस भेजे हुए.
and then open up with why you reached out. Love your profile picture, had to reach out, what's up in Lahore, again because I'm targeting the Pakistani audience as well. अगर किसी ने पाकिस्तानी audience में काम करना है और अगर बाहर के audience के काम करना है, it is gonna work in any city, country in the world. तो love your profile picture. कोई अगर पिक्चर अच्छी है या उसका कवर बहुत impactful है, you can just comment on couple of this person's posts and then make a relevant conversation. Hey, I just want to talk about this जो भी उसकी लास्ट पोस्ट होगी, ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं. इफ दे आर रिस्पॉन्सिव, मेक श्योर टू बिल्ड सम रैपो विद देम इनिशियली एंड देन गेट टू द पॉइंट. थोड़ी सी ना कन्वर्सेशन बनाई उसके साथ और देन उसके बाद ना उससे गेट टू द पॉइंट कर लिया जाए. मेक श्योर टू कीप, मैं आपके साथ टेम्पलेट शेयर करूंगा, ठीक है, बट मैं आपको ना एक फाउंडेशनल वर्क बताना चाहता हूँ. मेक श्योर टू कीप दिस सिंपल एंड इमेजिन दिस पर्सन बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो बी जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट देम. लाइक आप अगर कोई चीज उसके साथ शेयर कर रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं, देयर इज अ थिंग टू कनेक्ट, देयर इज अ वे टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. Talking about commonalities always helps, and also use humor as a tool. Highly recommended. Again, you can give these instructions to ChatGPT, and that ChatGPT can literally write the questions, and the whole conversation flows for you. Transition of a conversation. So this is how the transition of the conversation looks like. Name, can I ask you a question, something personal real quick? And then you wait for an answer. And then, hey, are you struggling with this right now? Question mark. Hey, just asking because I'm looking to interview a few people for some insights on something I'm working on. Then send. It's an interview, not a sales call, and it will take 15 minutes tops. Send. And if you're open to it, I can as well coach you on this for free in exchange. And then tell them what you want to achieve, XYZ. Hopefully now you understand. Are you struggling with more customers right now? Just asking because I'm looking to interview a few people for some insights on something I'm working on. Okay. It's an interview, not a sales call, and will take 50-minute tops. And if you're open to it, I can as well coach you on this for free in exchange to achieve extra 5 clients this month. अब आपको पता है कि उसको क्लाइंट चाहिए, पेशेंट चाहिए, वट एवर, और आप कहें कि मैं जस्ट इस बारे में आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है. लाइक यू वुड नो कि उन्हें क्या चाहिए. लाइक अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स स्टोर की सेल्स चाहिए, तो आप कहेंगे लाइक ई कॉम की सेल्स आपको चाहिए, आई कैन कोच यू. माइट भी आप थोड़ी सी रिसर्च करके यूट्यूब से सीख लें, लेकिन you have never worked with anyone, so but you can definitely coach, and they would love to listen to, because you are the expert and you are actually learning from different sources, and that person has no knowledge and no time to do it by themselves. So they would love to jump on a call with you. And if they're hesitant, remind them this is not a sales call, it's a friendly chat, and there is no intention to sell anything. जब आप कह रहे हैं मैंने बेचना ही नहीं है, and the goal is to get them on a short 15 to 30 minute call. Use Calendly, Zoom to host, so you can record, transcribe, and pull out the best bits in their own words. कोशिश करें Zoom के ऊपर कर लें, it's really good. Calendly, free Calendly का टूल है, उधर इस्तेमाल कर सकते हैं आप for using कैलेंडर लिंक आप अपना बना सकते हैं. और अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो अगेन यू जस्ट रीच आउट टू मी. आई हैव अ रियली गुड CRM जिसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, जिसके ज़रिए मैं ओवर 100+ या अपॉइंटमेंट्स जो है वो जनरेट कर रहा होता हूँ हर महीने बाय यूजिंग आवर ओन कैलेंडर लिंक, जो कि CRM के साथ कनेक्टेड है. और CRM के अंदर तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, देयर कंप्लीट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व विद इट. लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यू आर नॉट गोइंग इनटू द CRM साइड ऑफ थिंग्स, तो अगर आप इजी बनाना चाहते हैं, जस्ट कैलेंडली पे जाएं अपना क्विकली. एक कैलेंडर बनता है calendly.com पे जाके वहाँ पे पूरा सेटअप है, वो कैलेंडर बनाए, एक आपका ऑनलाइन कैलेंडर हो जाएगा. आप जाके अपने गूगल कैलेंडर के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे और उसको इस क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे. और अगेन जूम के ऊपर आप एक चैट कर सकते हैं वन ऑन अ वीडियो कॉल. सो अब फ्लो ऑफ अ मार्केट रिसर्च कॉल क्या होगी. तो पहला चीज तो आपने कर ली, आपने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, and then just थोड़ा सा thanks for accepting my request, open up with themselves, just compliment them. और उसके बाद जब थोड़ा सा हो जाए, like introduction हो जाए, तो बस just drop this thing. Can I ask you something personal real quick? क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ, आपने भी उनका टाइम वेस्ट नहीं करना और वो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. so just get to the point, और फिर आप इस तरह से चीजें लेकर आगे लेकर जाएं. अगेन just to make sure कि आप इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं,
and this will help you land clients as well. This is one of the strategy. So video conversation is beneficial, and you use Zoom to host the call, because मैं आपको बताऊं, अगर आप we teach, and I also teach students how they can close the deals using just their phone. uh, but the thing is that you also need to understand कि जब एक बंदा interact करता है ना आपके साथ, Zoom के ऊपर conversation करता है, high likely chance होता है कि वो close हो जाए. ठीक है? So build rapport for about 3 minutes, set the frame. And how do you set the frame? अच्छा, rapport जो होती है ना, जो build करनी होती है, वो शुरू में यही होता है कि hey, थोड़ा सा हाय हेलो इंट्रोडक्शन करके, और देन उसके बाद फ्रेम सेट करना होता है कि अब आप क्या करोगे. सो इसमें एजेंडा सेटअप करना होता है. सो कूल, इफ यू रेडी टू गो, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ एंड बिजनेस. I'm not looking to influence you in any way, so I'm just going to ask the question and shut up. When you feel complete, just let me know and I'll ask the next question. And I may ask you a few bonus questions based on your answers, but we'll stay right on time. And then at the end, I can coach you on your biggest problem if this is something you want. Sounds fair enough? Great. Okay, cool. अच्छा, अब क्या हो गया? There are 8 questions that you will ask on a market research call, so potential clients can get deeper to their needs and desires. मैं again बता रहा हूँ, जब आप वो offer niche की avatar और ये sheets fill कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सवालात हैं potential clients के बारे में. And you can only know about those potential clients if you know what are you struggling with in your business right now. You need to ask, what are you afraid of in the business? What are your top 3 daily frustrations? What do you stand for in the industry? What do you stand against in the industry? Just ask the questions and shut up. Yeah, that's what we tell in sales as well. Whenever you're trying to sell, just say and shut up. Follow-up questions to get even more. How so? Why is that? Can you tell me more about that? How did you come to that conclusion? Oh, how did that make you feel? Or how would that make you feel? Or how did that make you feel? What would it mean for you too? What would your day be like if you? Can you tell me how that felt? Tell me more. Best question. Tell me more. And then they will go in depth. अगर आपने देखा होगा डॉक्टर्स के साथ जब आप सेशन करते हैं, थेरेपी या कोई भी आप सेशन करें, तो वो आपको बताएगा, अच्छा थोड़ा सा और बताएं, कहाँ पेट में दर्द हुआ, कब हुआ, अच्छा, और so this is just like you are being a doctor. Avoid leading questions. Do not ask these. Wouldn't it be great if, like, you are suggesting what they would like, what they would like to them? What's most important to you about this? Is it this, or maybe this, or this? Stop talking after the first question. Let them answer. Don't plant suggestions. अपनी तरफ से अगर आपको पता होगा, तो आप ये market research call क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों उसको तंग करें? Let them be open to you. Don't you think that? Wouldn't you say that? Again, you're putting words in their mouths. Do you want something that does this, 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 this? Exactly what you think they want, instead of figuring out what they actually want. उनके अगर आप फीड करने लग पड़ेंगे ना जो आप समझते हैं, और if you start putting words into their mouths, then you are actually not getting a good understanding about your industry, because you're not figuring out what they want. ठीक है? तो ये मेक श्योर करना आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. And then end of call transition script के अंदर, after you're done asking them like 7 plus or minus 2 questions, like it could be 5, it could be 9 questions in your market research call, here's how you transition to the sales call. कहा था कि market research call है, लेकिन ये sales call बन सकती है. कैसे? Hey, if you're open to, I would like to coach you for like 10 to 15 minutes on what you just told me. If they say yes, over deliver. Like, for example, if they say, oh, I'm having a problem, I can't use the CRM, or I can't run the Facebook ads, like this is वो अपने तमाम issues बताते हैं, अपने desire बताती है कि I really want to run a big practice to make more money, this, like whatever the things they would tell you. तो अब ये करने के बाद my question is, then you know how they can get more clients. And if you know how they can get more clients and you can help them with, then if they're allowing you to for the 10 to 15 minutes, then that's your pitch. उन्हें बताओ, might be Zoom शेयर कर दे, स्क्रीन शेयर करके उससे बताओ, मैंने पिछले 15 दिनों में ये रिसर्च की है, this is what the ads
जो कि एजेंसीज रन करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। और माइट भी आप ये कहो कि मैं सब आपके लिए करके दे सकता हूं एंड आई एम गोना बी कॉस्टिंग यू फॉर फ्री। मतलब मैं आपको कोई चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है? बिकॉज जब आप उसको सारा जूम पे अपना पूरा फ्रेमवर्क, या जो आपने कोर्स देखा होगा, या जो आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे होंगे फेसबुक एड लाइव करने की या चीजों की, या ई कॉमर्स स्टोर रन करने की, और आपने उसको डॉक्यूमेंट में सारा स्ट्रक्चर किया होगा, तो द अदर पर्सन से ओ या दिस पर्सन हैज डन द होमवर्क, ओ ये काम वो कर रहे होते हैं, ओ कैन यू डू दिस, डू यू नो हाउ टू डू इट, या आई नो हाउ टू डू इट। तो आपने वो तमाम चीजें बताई उसको 15 मिनट के अंदर, उसको सब बता दिया जिसका जिसने आपने जो होमवर्क किया हुआ था, और फिर और उसको वो इशू रिजॉल्व करके दिया, अगेन बातों में ही रिजॉल्व करके दिया। ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा ना। सो वन ऑफ द टू थिंग्स विल हैपन आफ्टर यू फिनिश योर क्वेश्चंस और कोचिंग। वन ऑफ द टू थिंग्स, वन, either the prospect will ask what you have to offer or they say nothing। ये दो चीजें होंगी। ओके, राइट। और you just need to say, hey, what do you charge, how are you going to work with me, how are you going to work for me। ठीक है, इन दो चीजों में से एक, यही चीज, कोई ना कोई एक चीज होगी। ठीक है, तो एंड ऑफ कॉल ट्रांजिशन स्क्रिप्ट जो है, इफ प्रोस्पेक्ट आस्क व्हाट आर यू ऑफरिंग, देन योर रिप्लाई विल बी हे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। टू मेंटेन इंटेग्रिटी, जो मैंने आपको बताया था कोर वैल्यूज के अंदर, आई सेड दिस वुडंट बी अ सेल्स कॉल, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट आई हैव टू ऑफर, let's schedule a time to go over how that works and everything. I should be ready by this date. Does that week work for you? And client will say yes. आपने वो, क्योंकि मैंने एक और चीज आपको बतानी है, सेल्स का एक प्रॉपर मॉड्यूल, अगर आप लोगों को सेल्स की हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वी ऑलवेज सजेस्ट नेवर गो फॉर द वन कॉल क्लोज। अगर अगर डील का वॉल्यूम बड़ा है, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिटेनर एक बंदे के साथ करना चाहते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर पहली कॉल के अंदर उसको प्राइसिंग बता देंगे, वो आपको गोस्ट कर देगा और भाग जाएगा। बिकॉज इट वॉज अ वेरी फर्स्ट इंट्रेक्शन, उसी में आपने अंडरस्टैंडिंग की। कभी भी प्राइसिंग नहीं बतानी, कोई प्राइसिंग पूछे बिना उसे को 750 से लेकर $10,000 या $50 से लेके $5,000 तक सर्विस चार्जेस होती हैं। अब मैं आपको अगेन ये फ्लो ऑफ अ मार्केट रिसर्च कॉल से बाहर जाके बात बता रहा हूँ कि जब अगर आप क्लाइंट से भी नॉर्मली भी बात करना है, तो आपने पहली कॉल में कभी भी क्लोजिंग नहीं करनी। आपने हमेशा उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रैपो बिल्ड करनी है, उसके चैलेंजेस समझने हैं, उसको बताने हैं, और जब पूछे कि प्राइसिंग क्या है, उसे कि हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम, एंड इन द नेक्स्ट मीटिंग आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट यू विल गेट इन दोस प्राइसिंग्स, और आपके लिए कौन सा प्लान कस्टम बेहतरीन ऑप्शन होगा। आई जस्ट नीड टू डू अ बिट रिसर्च about your competitors. I used to do that. मैं आपके competitors को research करूंगा. It was like a 10 minutes job, but मैं आपके competitors देखूंगा वो क्या कर रहे हैं, किस एरिया में, like आप किस एरिया से हैं, उस एरिया में कौन सी बड़ी फिशेज हैं। मैं उनको लिटरली फेसबुक एड लाइब्रेरी से जाके उनके competitors के एड दिखाता था। मैं उनको बताता था कि ये उनकी वेबसाइट है, ये लैंडिंग पेज है, इस तरीके से वो कस्टमर ग्रैब करें, वो कहेंगे अच्छा ये मेरा कंपेटिटर ये कर रहा है, हाँ अच्छा, तो यही मैं आपके लिए करूंगा। फिर मैं एक पिच टेक बनाता था जिसमें बताता था मेरा पहला काम जो है वो एड्स है, अगेन क्लोजिंग का हिस्सा है, क्लोजिंग मॉड्यूल का, सेल्स मॉड्यूल का, अगर आप चाहेंगे तो। मैं वो पिच टेक प्रॉपर उन्हें पूरा का पूरा बताता था, उससे गुजारता था, और फिर जब वो हैप्पी हो जाते थे उनसे पूछता था आपको कैसा लगा सिस्टम, दे वुड रेट मी लाइक इट्स परफेक्ट, इट्स व्हाट आई वांट। तो जब ये चीज वो मुझे बता देते थे, देन आई जस्ट शेयर द प्राइसिंग विद देम। दैट्स हाउ आई गो फॉर द सेकंड कॉल। ठीक है, so your reply will be, thank you for your interest to maintain integrity. I say this wouldn't be a sales call, but if you're interested in what I have to offer, let's schedule a time to go over this thing, how that works. And instead, I should be ready by this day and time. तो आपको कौन सा टाइम होगा और आप मैनुअली आप कैलेंडर के अंदर बुक कर लें। अच्छा, if they don't say anything, just say the following. Okay, I'll be reviewing everything you said on the call and creating an offer based on yours and everyone else's feedback. Like I said, this is a sales call because there's nothing for sales just yet. But based on what we discussed today, I do believe I can help you. When my offer is complete, however, would you like to hear more about it? And if they say yes, then schedule the call manually as before. Great. I will go a bit deeper on the next call and explain my offer and how it works and everything. And at the end, you can make a decision whether you want to be a part of it or not. Sounds good? Yes. So
मैं अब ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. You can always rewrite in your own language, you can always rewrite in your own style, लेकिन मेन कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से आपने बनाना है अपने एंड के ऊपर. और अगेन इन तमाम वर्ड्स को, अगेन इन तमाम चीज़ों को यू कैन रोल प्ले, यू कैन प्रैक्टिस, और माइट बी यू कैन जस्ट सेव इट समवेयर एंड देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप ये काम, लाइक फॉर एग्जांपल आपने रोल प्ले करना है, किसी के साथ प्रैक्टिस करना है, या मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, या कंडीशन में खुद ही जाना है और देन उसके बारे में बात करनी है, और ये तमाम वर्ड्स आप अपने सामने भी रख सकते हैं मीनवाइल हैविंग अ डिस्कशन विद द कॉल विद द क्लाइंट. और ये जब आप बोल रहे होंगे तो दीज विल बी वेरी इम्पैक्टफुल. बट जितना आप रोल प्ले करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, hey, sounds good. Or if you just repeat, like I can share this with you. Like for example, अगर आप reading करेंगे, great. We will go a dip deeper on the next call and explain my offer and how it works and everything. And then at the end, you can make a better decision whether you want to be a part of it or not. Sounds good? अच्छा, ये तो reading होगी, ठीक है. और अगर मैं इसको कहें, great. So, and Michael, we will go a bit deeper on the next call, and I'll explain my complete offer and how it works and everything, whatever we are doing on our end. And at the end, if you feel that you want to become a part of it or not, we can discuss about it. Sounds good? So I'm just telling you, like, you can put the emotions into it. Okay, I'll be reviewing everything what you just said on the call. And what I will do is that I will create an offer based on your feedback and everyone else. And like I said, this is in a sales call. I told you. Do you remember, right? So this is a sales call. And because there is nothing for sales just yet, and I really wanted to get your feedback. So now you understand I'm adding emotions into it. So you can always do that, even if these lines are in front of you. Ideally, you already have people who have relationships. अब हो क्या रहा है? Ideally क्या होगा market research call से? Ideally, you already have people who have relationship with you, who you can interview in this way, but you can also do with referrals, people you share a group or organization with, online or offline, and many more. The key is to gather real information from real people who want an actual solution to their problem or pain, wherever you might find them. आप क्या कर रहे हैं? आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट थिंक अबाउट इट. जस्ट थिंक अबाउट इट. मेरी इंडस्ट्री के अंदर मैं टिकटॉक एड्स के ऊपर काम सीखना शुरू कर देता हूँ विदाउट डूइंग दिस एक्सरसाइज जो कि मैंने लास्ट टाइम में आपको बताई है. और टिकटॉक या माइट बी एक प्लेटफॉर्म को मैं सीख रहा हूँ, मुझे पता लगता है टिकटॉक से तो मैं उनको कस्टमर्स ला के नहीं दे सकता. उनका जो पेन है, जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल माइट भी उनका प्रॉब्लम एड्स ना हो, उन्हें जस्ट वेबसाइट बनानी है, उनके पास कस्टमर है, माइट भी उनके पास ऑलरेडी कस्टमर बहुत अच्छा आ रहा है एंड दे जस्ट वांट टू स्ट्रक्चर इट इन द सीआरएम. माइट बी दे जस्ट वांट scripts for their agents. Might be the problem would kind be like different. Might be आप एक बायर एजेंट को लिस्टिंग बेच रहे हैं. अब बायर एजेंट क्या होता है? लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग होती है प्रॉपर्टी. दो तरह के एजेंट होते हैं, एक बायर्स होते हैं और एक सेलर्स होते हैं. अब सेलर के पास प्रॉपर्टी बेचने वाले ऑनर का डाटा होता है, प्रॉपर्टियां होती है. बायर्स के पास खरीदारों का डाटा होता है. अब एक बायर एजेंट है जिसको बायर्स को के लिए डील निकालना. दो तरह के दो एजेंट्स होते हैं, दोनों आपस में डील करते हैं दोनों पार्टीज के बिहाफ के ऊपर, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है. तो अगर आप बायर एजेंट बहुत जबरदस्त हैं, आप प्रॉपर्टीज नहीं मैनेज कर सकते, आप प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग नहीं ले सकते, और आप उनको जाके बायर्स बेचें, वो कहेगा आई एम अ सेलर, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज टू गेट लिस्टिंग्स. ठीक है. सो एंड फ्यू थिंग्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि कस्टमर्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए, क्लाइंट चाहिए डिजिटल टाइम के ऊपर, ये सब का इश्यू होगा. ठीक है. लेकिन व्हाट्स द मेन बिग पॉइंट? क्या पेन है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सिर्फ कस्टमर नहीं होगा ना. फॉर एग्जाम्पल, आप ये कोर्स देख रहे हैं, आपको पैसे कमाने. पैसे कमाने क्यों हैं? माइट भी आप ये कहेंगे कि मुझे अपनी अम्मी को हज कराना है, माइट भी मैंने एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने ट्रैवल करना है. नाउ दीज आर थिंग्स दैट यू विल डू विद मनी. सो प्रॉब्लम, व्हाई डू यू वांट टू हैव द ट्रैफिक? देन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू दैट इमोशनल साइड, क्योंकि लोग क्लोज होंगे इमोशनल साइड के ऊपर. ठीक है. किसी के लिए पैसा बहुत प्यारा है, लेकिन पैसे से वो अचीव क्या करना चाहता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू ट्रैवल. So how would you travel if you stop getting leads from LinkedIn?
Afras, yeah? Yeah, you're right. How would I travel? Because I need these leads to travel more, not get customers, to travel more. That's my pain and problem. Hopefully you understand this thing. Ideally, ye cheez hogi. Next step, then once you have a good handle on the problems, you move to the next step. Now you have a message and a pain you're trying to solve for a specific person. And market research call, next steps kya hai? Ask yourself, where do these people hang out? What stage do they need to be at before what you have to offer will help them? In this way, you can begin to pick the groups online you want to begin to add value to over time. And 5 to 10 solid groups that fit your target demographics are plenty. You're not there to say buy my service. This will piss people off and get you banned. This is very much important. Group mein jaake nahi kehna buy my service. You're there to help. You're there to introduce yourself. You're there to build connections. So create valuable content that would help the group with the problems they have. You're not asking for anything at all right away, simply giving value consistently and building a relationship. It's an art and a skill that takes time to develop, but it is the most important skill you could ever develop. Eventually, inevitable, someone will reach out to you and ask you more about what you do, in which case you can feel out where they're at a bit, shoot the breeze, and schedule a service overview call, a strategy session in order to win the business. That's how it works. ठीक है, अब क्या कंटेंट बनाना है, कैसे बनाना है, क्या ऑफर होगी, कैसे लोगों को सर्विस ओवरव्यू कॉल के लिए लेकर जाना है, वो नेक्स्ट स्टेप्स है. लेकिन इस तक आपको ये पता लग गया कि मेरी कौन सी निश है, मैं किस निश के अंदर उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पेन्स हैं. नाउ यू कैन क्रिएट द राइट ऑफर, जो कि अब हम नेक्स्ट रिजल्ट बेस्ड ऑफर क्रिएशन मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे. सो एंड लास्टली, this market research process is a numbers game. Be okay with it. It's powerful. And this is the quick overview. How to start the conversation, what is the transition of the conversation to an ask for a market research call, and a complete flow of a market research call. और ये इतनी खूबसूरत है कि आपके पास अब इस मॉड्यूल के एंड तक, when you're trying to reach out to the people, you have people in your pipeline that you can sell to, and you know their problem, they will listen to it, they will respect your homework, and then you can close them and you can start making money right then and there. If you don't know, this is how I made money. This is how you can also make money. It's a very free and easy. You're not selling. If you're not salesy, you don't know how to sell, you're not selling here. You're just helping them out. You're just having an interview session. You're just trying to find their pain points. And you can even tell, even if you're a beginner, hey, I'm trying to help. I'm just starting out and I'm doing a lot of research and I want to help and I want to make an impact. Just create your why you want to be in that industry. And then you just have a communication with them. Hey, if I could find the solution, can I work with you? Can we work together? And I'm telling you, the people would love to hear this. People are okay if you're going to provide the value and you have no greediness. Don't be greedy in the start. First, identify the market. जो कि अभी मैं next में चीज में आऊंगा कि how you can provide this free services to learn. Just ना मैंने आपको बताया कि you can become, if you're a very good sales person, तो आप तो e-commerce के पहले client को close करेंगे, $500 लेंगे, then उसके बाद कोर्स लेकर then उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. लेकिन अगर नहीं है आपके अंदर वो सेल्स स्किल, आपके अंदर नहीं है वो एक कॉन्फिडेंस, तो कोई मसला नहीं है. एक दो क्लाइंट को फ्री सर्विस देकर या मनी बैक गारंटी देकर, क्या मुझे $500 दे, मैं आपको ये रिजल्ट ला के दूंगा, नहीं होगा मैं मुझसे आप $500 वापस ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है. But in this journey, you will learn how to serve people. Thank you. See you in the next module. Take care.